A very good afternoon and warm welcome to all of you. I am CA Dipti Jain and I welcome you all in GyaanStation Knowledge Booster sessions jointly with Income Tax Bar Association, Ahmedabad. GyaanStation Knowledge Booster session is conducted by GyaanStation from 4 to 5:30 for the benefit of all the professional brothers and sisters. We can proudly say that it's been the fourth year of our EdTech platform, and we have received the award for our educational courses for professionals at Bombay Stock Exchange in the year 2022. Through GYAN Station, we are in corporate trainings, physical as well as online professional education and skill development programs. We cater the professionals from diverse fields like CA, CS, CMA, HR trainings, MBAs, financial advisors, and much more. You can also subscribe to our GyaanStation YouTube channel to watch the videos, updates, and all the recordings. Today's session is very important. Tax planning before 31st of March. Tax saving through tax harvesting, and this will be taken by the financial architect CA Kaushik Gadaji from Mumbai. And here I also recognize the gracious presence of President of Valuer Association, CA Ram Mohan Bhaveji, who had joined us and graced GYAN Station today's event. And I also recognize the presence of Ashish Tekwani ji. To welcome all our delegates, I request Ashish ji to please take the charge. Welcome, sir. Today's topic you will be covering, but it is a very important topic. So many times we see that while filing the return, people just forget that they had to make the investment on last date and they have forgotten to take the proper deduction. Also, the tax harvesting is going to be an important topic because गुजरात में तो ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसका शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं होता एंड लाइटर टोन में इधर बोलते हैं कि बच्चा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट और डीमैट अकाउंट साथ में बनवाते हैं कि दोनों एक ही दिन पे आता है सो यस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी सीरियस टॉपिक जोक्स अपार्ट एंड यस thank you Dipti for coordinating so after such a hectic schedule of last week such an important seminar and I also welcome Bhave sir and it will be a great pleasure for our members also to learn from you. Thank you, sir. Thank you, Ashish ji, for this wonderful welcome note. And here I take the honor to introduce the guest who have joined us and graced our event. He is a chartered accountant, company secretary, cost accountant, DIF, IFRS in the year 2009, valuer BCom and LLB. He is the winner of Limca Record 2011, Global Research Award 2019, Asia Pacific Award 2020, EdTech Entrepreneur Award 2022 from Saurav Ganguly and Flag Bearer of Profession Award from ICSI, Institute of Company Secretaries, twice. And he is also the speaker, faculty, chief guest at various organizations. He had been to international conferences at Qatar, India, Singapore, and many more countries. He had been the speaker to many regional and national conventions of all the three institutes. He had trained the officers from RBI, SBI, LIC, C&AG, MCA, and IBBI. He had delivered more than 3,500 lectures on IFRS and Ind AS valuation since 2010, interviewed 5,000 and recruited 5,000 professionals and recruited 2,000 chartered accountant, cost accountant, company secretaries during his industry career. He is the approved partner of IFRS International Body and ACCA London. At the age of 67, he is the squash player and swimmer. Hats off to your spirit, sir. We feel very active and energized after knowing such a energetic person like you. Apart from this, he is also
worked with Reliance Mukesh Ambani and London Lakshmi Mittal, and at USA with Chandarias. We worked with in USA, Singapore, Australia, London, Bulgaria, and many more countries. Currently, he is the president of Association of Valuation Professionals. He had been also the independent director on board of LIC Mutual Fund and few others companies, consulting regularly on IFRS valuation in startups from last 13 years, and delivered his services in 30 to students in 31 countries and more than 131 cities across the globe. With this words, it's sheer honor to welcome you and have you on the board. Over to you, sir. Sir, your screen is on mute, please. Sir, it's on mute. Sir, your screen audio is on mute. One minute, 1 minute, 8 minutes. Okay. Just 1 minute, sir. You will be able to unmute yourself. Yeah, please unmute. Now you can unmute yourself. All right. Are you all Okay. able to Yeah. hear me? Yeah, sir. Please, Okay. please. Okay. I'll just take your 2 minutes because I mean, I never knew my introduction also so well. So, Dipti, thank you. And it's an honor to be here. And, such a great program of tax harvesting. So, though I have worked for now 43 years experience, 30 years in industry and 13 years in my consulting, tax had always been a riddle for me. I'm very well known for IFRS and valuation, but when it comes to my own return, I run to the people like Kaushik. And so, therefore, here I'm a big student of yours who will have to really understand. And it's a great pleasure to welcome all the people here who have spared the time uh, because without audience, no speaker can succeed. And thanks to GyaanStation because Dipti ji is doing a great job. So whenever you want knowledge, you have to stop at the station of Gyan, and she has started that venture. So whenever I meet her, I get further inspired that one can do a lot. That which she has achieved in such a young age. With this, I hand over to you, Dipti ji. Thanks a lot. Thank you, sir. It's your kind heart, your big heart that you admire the young professionals and motivate all of us. And we look up to you for whatever we do in our profession. Sure, Thank always, anytime. Thank you, sir. So, with his words, now I would like to introduce our today's speaker, Kaushik Gadaji. He is the financial architect and the founder of KG Investment. He have over 2 years of experience in designing financial life of people and help people achieve their financial goals. He is a qualified person, financial professional, QPFP, and a chartered accountant with a background in audit and taxation. His mission is to help people achieve their financial dreams and goals through various financial instruments best suited to their needs. He follow a client first and ethics at heart approach that ensures trust, transparency, and satisfaction. He also leverage skills in financial analysis, strategic financial planning, and personal finance to deliver optimal solutions and outcomes to the clients. With these words, Kaushik ji, the stage is all yours. Over to you. Thank you so much, Dipti ji, for this kind introduction, and also respected Bhavesh sir. It's a client pleasure, to see you, one of the audience. It was the other way around. बहुत पहले जब we were students, we used to listen to you, and it's a pleasure,
to have such a great personality in the audience. And I have been seeing Bhavesh sir, he's never settled with any of the things. जो भी नया आता है उसको adapt करते हैं. This is what the quality which a chartered accountant has, and every individual should have. जो नया है उसको adapt करें and then develop that skill. So Bhavesh sir, you are just one of the idols for the young ones. You never just settle with just one thing. And thank you, Ashish ji, for being a partner with this GyaanStation. Okay, so good evening, everyone. How are you all? And if you could just, type in the chat box, we'll have some participation as well. From which city are you from, and whether you are a chartered accountant or an investor or whosoever you are, you can just put it in the chat box. So just we can get to know each other for a couple of minutes. Which city? Just would like to keep the session is going to be very interactive. So we want participation from all the 84 members, and many are just going to join us from all of them. Okay. And please keep answering our speaker. Okay. Ahmedabad, very good. Hyderabad से है, दिल्ली से है, हैदराबाद से है. Very good. Financial advisor, freelancer, very good. Very good, very good. Yes, guys, keep putting in your answers. Yeah, very good, very good. Raipur. Okay. So Dipti ji, if you can just allow me, to share my screen. You can share, sir. Yeah, okay. Let's have an active participation and keep posting your queries, because you are just going to have an excellent ideas to save your taxes in Okay, this so next it's a 1 wide, hour. so it's a wide variety of the audience here, students as well as chartered accountants and many other investors as well, and financial planners as well. So basically, tax harvesting through tax planning through tax harvesting, ये कुछ अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट एक तरीका है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट आपका जहाँ से आपका टैक्स आउटगो जो है उतना कम से कम you can minimize. So is it okay, ma'am, if I can, Hindi and English, you can mix both of them? Yes, or yes, both the language. Yeah. Yes, please. Okay, perfect. So tax harvesting एक तरीका है जहाँ पे you can minimize your tax outgo. So again, it is only with respect to shares, mutual funds, and PMS that you have. But before we start about tax harvesting, it is better to understand all other instruments जहाँ पे क्या-क्या instruments available हैं, because this is the fag end of the year, financial year, and अभी if you want to invest, it's only 1 week left, because there are a couple of holidays जहाँ पे bank transactions will not happen, and you have only couple of few more days only to do the transactions. Okay, what we will cover is the tax saving options which whatever are available. तो tax harvesting का मतलब क्या होता है, tax loss harvesting, tax gain harvesting क्या होता है, फिर different mutual funds का taxation कैसे होते हैं, what are different types of mutual funds, उसमें taxation of provisions क्या क्या होते हैं, उसके फिर set off का provisions देखेंगे with respect to this capital gains, and tax harvesting what are steps you have to follow, and tax harvesting का फायदा भी क्या है और नुकसान भी क्या है और कभी करना चाहिए. These all will cover in this next 1 hour. And if you have any questions, you can please note it down, and maybe at the end of the session we can take up a couple of questions which we can do. Okay. Okay, ये जैसे कि I told you कि tax savings के लिए there are a couple of investment ideas that we need to follow. If somebody has already attended, then this will just be a revision of what we have taken up. But this is very important, to understand what all tax saving options are still available for you before 31st of March. Okay. These are basically couple of 86A deductions, 80C में और बाकी जो sections में available है, तो उसका deductions क्या क्या available है, so those we will discuss. And here when we talk of 86A, chapter 6A deductions, so there are, the investments are based on two things. One is investment based and one other is expense based. So investment based क्या होता है कि when you invest, you get this benefit of the investment that you made. Means आपने जो investment किया वो कहीं ना कहीं over a period of time you get that back.
उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस बोलते हैं। एंड अदर थिंग इज कि एक्सपेंस बेस्ड मीन्स आपने खर्चा किया वो साल में वो कंज्यूम हो गया एंड उसका आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा, बट देन उसका कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट फ्यूचर में जाके नहीं मिलने वाला है। तो दोज आर एक्सपेंस बेस्ड। तो चैप्टर 6 में इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस क्या क्या है, जैसे पीपीएफ, ये एटीसी, एटीसीसी, ट्रिपल सी, एटी डबल सी डी वन में ये सब जो सेक्शंस है, तो दीज आर ऑल कवर्ड एज इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस। जैसे पीपीएफ है, ईपीएफ है, एलआईसी प्रीमियम है, यूलिप है, एनएससी, ये सब जो स्कीम्स है, ईएलएसएस, pension funds, NPS, and again addition is ATCCD 1B, which is additional contribution to NPS, जो अलग से मिलता है ओवर एंड अबव 1,50,000 का जो लिमिट है उसके ऊपर। नेक्स्ट इज एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शंस, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एक बार करना है, मींस आपको जो पेमेंट करोगे उस बेस पे आपको डिडक्शंस मिलेंगे, बट यू डोंट गेट एनी फ्यूचर मॉनेटरी बेनिफिट। हाँ, इट कैन बी लाइक हाउसिंग लोन, तो हाउसिंग लोन का आपको घर मिलेगा, बट इट इज नॉट ए मॉनेटरी बेनिफिट, आपको रिटर्न्स में कुछ नहीं है। ओके, यू हैव टू पे द EMIs, and that after payment of this EMIs, that you get the position of the house, sorry, the ownership of the house once you complete the EMIs. Payment of tuition fees, medical insurance premium, again this is a yearly premium, आपको साल जो साल में पेमेंट करें उस साल में आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है रिटर्न्स में। ओके, सो दीज आर, दैट्स व्हाई इसको एक्सपेंस बेस्ड बोलते हैं। देन मेडिकल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, पेमेंट ऑफ रेंट, donations to charitable funds or charitable institutions, ये these are all expense based deductions under various sections। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या कवर भी होता है, what are the limits and all those things also। We'll just cover just briefly, I'm not taking going to take this very deeply into any of these sections, but I'll just cover the overall ऊपर ऊपरी कवर करेंगे। 80CCC वाला जो है, 80C, 80CCC, 80CCC में 1.5 लाख का लिमिट है, उसमें ये सब कवर होते हैं, प्लस एनपीएस भी आता है, बट अगेन द लिमिट इज 1,50,000। एनपीएस आता है, पेंशन प्लान आते हैं, अटल पेंशन योजना में अगर आप पेमेंट करते हो वो भी इसमें कवर होता है, बट अगेन द लिमिट इज ऑल अप टू 1,50,000 ओनली। उसके बाद 80CCD1B, विच इज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 ओवर एंड अबव 1,50,000, जो एनपीएस में आप कर सकते हो। ओके, देन 80CCD2, अगेन दिस इज अ कॉर्पोरेट एनपीएस, जो सैलरीड वाले बंदे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और डीए का वो लोग, इफ द कॉर्पोरेट इज मेकिंग द इन्वेस्टमेंट पेमेंट, देन इट इज अवेलेबल टू देम, इट इज नॉट अवेलेबल टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। 80CCD2, फिर देन 80D, जो अगेन विच इज ओवर एंड अबाउट द 1,50,000 लिमिट ऑफ 80C वाला, कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहता है उसका अगर आप बिलो 60 हो, तो आपके लिए, if you and your parents are below 60, then the premium is 25,000, and if you make your payment for the parents, additional 25,000 आपको प्रीमियम मिलता, बेनिफिट मिलता है। so the total benefit is 50,000। if you are below 60 and your parents are above 60 age, then 25 plus 50, total you get is 75,000, ये आपको बेनिफिट मिलता है। बट अगर दोनों अबाउ 60 है, मींस जो इन्वेस्ट का जो प्रीमियम पे करने वाला उसके पेरेंट्स भी वो था अबाउ 60, देन 50,000 दोनों को मिलता है। सो मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीज आपको इसमें 80D में टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। बट बहुत बार क्या होता है, इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, वहां पे बहुत सारे राइडर्स अटैच होते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, हेल्थ इंश्योरेंस राइडर, हॉस्पिटल कैश राइडर। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस के साथ अगर ये राइडर्स भी अटैच है, तो उसका भी जो प्रीमियम अमाउंट है, दैट बेनिफिट यू कैन टेक अंडर 80D। तो ये आप ध्यान रखिए, और यू कैन ऑल्सो चेक विद द क्लाइंट्स, यू कैन इन्फॉर्म देम ऑल्सो कि इफ अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें अगर राइडर्स है विद रेस्पेक्ट टू क्रिटिकल इलनेस, हेल्थ, कैंसर इंश्योरेंस, तो ये सब का जो प्रीमियम का है वो भी बेनिफिट वो 80D में मिल सकता है। ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू हेल्थ इंश्योरेंस, जो फ्लोटर पॉलिसी रहते हैं उसके अलावा टॉपअप पॉलिसी रहते हैं, सुपर टॉपअप प्लान्स भी रहते हैं, वो अगर प्रीमियम है वो भी 80D में कवर होता है। तो दिस यू कैन इन्फॉर्म योर क्लाइंट्स, और यू कैन चेक व्हेन आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं, यू कैन चेक दैट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न्स। देन अदर सेक्शंस आर 80DDB,
जो डिपेंडेंट के ऊपर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, उसका एक्सपेंस मिलता है अप टू 1 लाख रुपीज। 80E जो है अगेन एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पोर्शन है, देयर इज नो लिमिट टू इट, इट इज अप टू द इंटरेस्ट अमाउंट दैट यू पे, उसका पूरा पूरा डिडक्शन मिलता है। 80EE again it is an additional deduction with respect to interest on the housing loan, उसका 50,000 तक मिलता है। 80G donations, individuals जो donation देते हैं उसका based on which institution that you donate up to 50% और 100% उसका डिडक्शन मिलता है। 80GGA again it's a investment for scientific research। 80GG it is the rent portion, अगर HRA नहीं मिल रहा है आपको फॉर salaried portion people, अगर उसमें HRA का component नहीं है उनके salary component में, then they can take this benefit under 80GG। and also other than salaried people they can take the benefit if they are paying rent, they can take the benefit under 80GG। एंड अभी दूसरा अभी है कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो बहुत सारा केसेस भी हुए हैं कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेशन 100% डिडक्शन मिलता है, बट देन प्लीज कीप इन माइंड दैट द डोनेशन शुड बी टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, which is very important because recently बहुत सारे cases notices गए हैं individuals को where the donations have been given to political parties but then there is no proper proof to give the proof। फिर इंडिविजुअल्स के लिए 80TTA इट इज जो सबको पता है 10,000 तक मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 50,000 विद रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट, ये सब डिडक्शन मिलता है। 80U अगेन it is respect to deductions with respect to disabilities up to 75,000 irrespective of the expenses, आपको पूरा पूरा डिडक्शन मिलता है। देन these are the basic 80C में अगर आप देखेंगे तो जो मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसका एक कंपैरिजन है कि लोग कहाँ कहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका लॉक इन पीरियड क्या होता है, उसका रिटर्न्स क्या होता है, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या क्या मिलता है। पीपीएफ अगर आप देखो तो इट इज अ 15 ईयर लॉक इन पीरियड इन्वेस्टमेंट लिंक इंश्योरेंस जो which is generally called a ULIPs। अगेन 5 years का लॉक इन होता है, बट फिर जो पॉलिसी कवर रहता है वो 15 साल तक का रहता है, 15-20 साल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पॉलिसी दैट यू टेक। देन 5 year बैंक एफडीज और पोस्ट ऑफिस में भी अगर एफडी मिलता है तो इसका 5 years का लॉक इन रहता है। नेशनल सेविंग स्कीम्स अगेन दे आर 5 years। ELSS which are the least lock in period, okay these are only lock in for 3 years, उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हो। NPS lock in is till the age of 60, only in case of emergency you can withdraw but again not the full amount। इसके रिटर्न्स अगर आप देखो तो पीपीएफ, ELSS, सॉरी बैंक एफडीज, एनएससी में these are returns which are guaranteed, जो गवर्नमेंट देती है। ELSS and NPS, the returns in this case are market linked, so there is no guarantee on the returns that this investment instruments will generate, but then the longer you keep the funds in this invested in here, the better are the chances कि आपको रिटर्न्स एक अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। अभी टैक्स ट्रीटमेंट इनसे देखेंगे तो पीपीएफ में ऑन विड्रॉल इट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस अब देखते हैं तो उसमें कैपिटल गेन्स होता है। बैंक एफडीज में जो इंटरेस्ट इनकम होता है दैट इज अगेन टैक्सेबल। एनएससी में इंटरेस्ट इट इज टैक्सेबल। ELSS व्हेन यू रिडीम इट इज कैपिटल गेन्स। एनपीएस पे इंटरेस्ट इनकम आता है, इंटरेस्ट इनकम, बट इट इज नॉट टैक्सेबल इन द सेंस कि द फंड्स keeps growing, you don't get a fixed withdrawal on such on NPS। Now we are comparing ELSS and PPF। why दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्योंकि ऑलमोस्ट इसका अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड देखोगे दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में टैक्स बेनिफिट एटीसी का सेम बेनिफिट है अप टू 1,50,000, बट दोनों में फर्क है कि ये पीपीएफ में गारंटीड रिटर्न्स है, ELSS में मार्केट लिंक रिटर्न्स है। ELSS लॉक इन इज 3 years, पब्लिक पीपीएफ में 15 years लॉक इन है, बट इसका विड्रॉल अलाउड है, सब पार्शियल विड्रॉल अलाउड आफ्टर 6 years। ओके, अभी ELSS में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? एक रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF एंड NRIs आल्सो कैन इन्वेस्ट इन ELSS, बट पीपीएफ में ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स कैन इन्वेस्ट और ऑन अ सिंगल मोड और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आल्सो। तो ये सबका लिमिट मिलके 1.5 लाख ही होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है।
तो हम लोग जस्ट एक बार कंपेयर करेंगे कि अगर ईएलएसएस में करेंगे और पीपीएफ में करेंगे, 15 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 1 लाख रुपए एवरी ईयर करते हो लास्ट 15 साल से, 20, ये डेटा मार्च 23 का है, बट अगर 24 का भी लेता तो ऑलमोस्ट सेम फिगर आते थे कि एवरी ईयर अगर 1 लाख आप पीपीएफ में करते थे तो उसका रिटर्न कितना होता था, और ईएलएसएस में अगर आप करते थे तो उसका रिटर्न कितना होता था। पीपीएफ का एक बेनिफिट है, 15 साल के बाद उसको आप रिन्यू कर सकते हो अगेन, फॉर एवरी 5 years यू कैन कीप ऑन रिन्यूइंग इट। ईएलएसएस में आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा आपका बढ़ते रहता है। यू डोंट हैव टू कीप रिन्यूइंग दैट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप ये पीपीएफ में लास्ट 26 साल अगर लाख लाख रुपया एवरी ईयर करते थे तो पीपीएफ में आपका इन्वेस्टमेंट 26 लाख होता था। सेम ईएलएसएस में भी अगर आपका 26 लाख होता था तो उसका वैल्यू कितना होता था, आप देखिए कि पीपीएफ में अराउंड 80 लाख 81 lakhs होता था, एंड ईएलएसएस में इट वुड बी अराउंड 5.68 crores। तो ईएलएसएस में पैसा आपका 7 times बढ़ा। क्यों? बिकॉज आपका पैसा मार्केट में था। द लॉन्गर यू आर इन द मार्केट द बेटर आर द चांसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। So this is one thing, if you can advise your clients कि आप पूरा पैसा पीपीएफ में मत लगाओ, यू कैन पार्टली इन्वेस्ट इन ईएलएसएफ, पार्टली इन पीपीएफ, सो दैट आपका वेल्थ अच्छा खासा बन सकता है। अगर आप एनपीएस में करते थे, ओके, तो अभी जो न्यू रिजिम है, न्यू रिजिम में तो अभी आपको कोई इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं। दीज आर ऑल अज्यूमिंग कि आप ओल्ड रिजिम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओल्ड रिजिम में आपका ये सब बेनिफिट ले रहे हो, उसका है। तो जैसे कि देखेंगे कि अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करते थे और एनपीएस में भी करते थे, एनपीएस में इट इज एडिशनल 50,000 ओवर एंड अबव 1,50,000। तो अगर न्यू स्कीम में है तो आप देखेंगे कि 7.5 लाख अगर आपका इनकम है और 50,000 डिडक्शन है तो आपका न्यू रिजिम में आपका कोई टैक्स नहीं है। बट अगर आप ओल्ड रिजिम में कर रहे हो तो 7.5 लाख तक का इनकम, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख का ईएलएसएस, तो 5.5 लाख आपका नेट टैक्सेबल इनकम, अगेन फिर कोई टैक्स नहीं। एडिशनल अगर आप एनपीएस में भी करते हो तो 5 लाख आपका नेट टैक्सेबल इनकम, तो आपका टैक्स एडिशनल जो आपका 2 लाख इन्वेस्ट करते हो ईएलएसएस में 1.5 लाख प्लस एनपीएस में 50,000, तो यू कैन सेव टैक्स अप टू 62,500। तो ये अगर आप ईएलएसएस और एनपीएस से दोनों करते हो तो आपका इतना पैसा बचता है। बट वन थिंग विच आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म और बी क्लैरिफाई कि लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं। तो इट इज हाईली नॉट रिकमेंडेड टू बोरो मनी टू डू सम टैक्स सेविंग। बट ये प्लानिंग आपको अप्रैल से स्टार्ट करना चाहिए कि अगर आपको टैक्स सेविंग करना है कि नहीं करना है, कहाँ कहाँ पे करना है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द जो हम लोग आज सेशन थे कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है। ओके, एंड टैक्स हार्वेस्टिंग बेसिकली बहुत लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। अहमदाबाद में है, गुजराती है, अगर शेयर्स है तो डेफिनेटली, जैसे आशीष भाई ने बोला है कि अहमदाबाद में अगर कोई बच्चा होता है तो डीमैट अकाउंट साथ में ओपन होता है। तो डीमैट अकाउंट इसके साथ है। हेलो। So you are on mute. You're just a minute. The screen is visible. There's some. So your voice is not audible, Kaushik ji.
Your voice is not audible, Kaushik ji. Hello. Hello. Yeah. Now it's audible. क्या देती है? वो audible now? Yeah. Very much audible. Please continue. Hello. Yes. Please continue. Dipti, I cannot hear your voice. Hello. I can hear your voice. Your voice is audible. Anyone from the participant can write in chat box. Is it audible to them? Yes, sir. Kaushik ji, Okay. it's audible. Fine. Thank you. So let's get on to what is tax harvesting. टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो टैक्स का बेनिफिट है, इट इज लाइक कि जो भी टैक्स का बेनिफिट अवेलेबल, अगेन दिस इज ऑल विद इन द पर्व्यू ऑफ द टैक्स प्रोविजंस, which we are not doing anything illegal, we are not evading any taxes, but it is just the planning कि आपका टैक्सेस कैसे कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं. तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो शेयर्स है या तो पीएमएस के अगर आपने पीएमएस में इन्वेस्ट किया या तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, वो अगर आपके लॉस में है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके लॉस को बुक करके आपके जो भी कैपिटल गेन्स है उसके अगेंस्ट में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, सो दैट आपका टैक्स आउटफ्लो कम हो. तो लॉस को बुक, आपका अनरियलाइज्ड लॉसेस है, पेपर में आपका लॉस दिख रहा है, नोशनल लॉस है, एंड आपके सामने दूसरा आपके पास रियलाइज्ड गेन्स भी है. तो यू कैन इमीडिएटली और अनरियलाइज्ड लॉसेस को, आपको रियलाइज्ड लॉसेस को बुक करके जो गेन्स है उसके सामने उसको आप सेट ऑफ कर सकते, ताकि आपका टैक्स जो टैक्स होने वाला है गेन्स से उसको आप कम कर सकते हो. लॉस करके इमीडिएटली यू बाय द शेयर्स अगेन और म्यूचुअल फंड यूनिट्स अगेन, सो दैट यू आपका एक लेवल जो है, मीन्स आपका जो कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है उसका कॉस्ट आप बढ़ा सकते हो. सेम वे फॉर टैक्स गेन हार्वेस्टिंग, ये क्या है? इट इज स्ट्रेटेजिक सेलिंग ऑफ शेयर्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जिसका वैल्यू बढ़ चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग. उसको आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और इमीडिएटली जैसे सेल होता है, जैसे फंड्स आपके आपके अकाउंट में आ जाते हैं, इमीडिएटली यू इन्वेस्ट इन द सेम फंड और द सेम स्टॉक्स. बट आपको ध्यान रखना है कि आपको जो 1 लाख का लिमिट है उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा. 1 लाख का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा. एंड व्हेन यू इन्वेस्ट बैक अगेन, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है फॉर नेक्स्ट ईयर. वैसे क्योंकि अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म बड़ा चल रहा है, सो दैट फ्यूचर में जाके जब भी आपका ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां पे टैक्स आपको देना ही होगा. दिस वे इट इज जस्ट दैट वी आर सेलिंग, डूइंग द प्रॉफिट बुकिंग एंड बाइंग इट अगेन, सो दैट वी आर इंक्रीजिंग द परचेस कॉस्ट, द बेस कॉस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स. नाउ इसका डिसएडवांटेजेस भी है जो हम लोग आके देखेंगे बाद में कि ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए. बट अगर ये इट अगेन दिस इज नॉट फॉर एवरीवन. आपको जिसको समझता है, जो क्लाइंट्स हु कैन अंडरस्टैंड अबाउट द टैक्स हार्वेस्टिंग, उनको उनके साथ ही आप करो, सो दैट इट इज एडवाइजेबल फॉर देम कि दे कैन सेव लॉट ऑफ टैक्सेस इसमें. नाउ हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड्स है, कैसे अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं और उनका टैक्सेबिलिटी क्या है, उनका टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स कैसे है, उनका टैक्सेबिलिटी कैसे होता है. तो ये म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग कैटेगरी है. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स. जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है उसमें भी इक्विटी और डेट होता है, और देन डेट म्यूचुअल फंड्स होता है. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कौन से फंड्स को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं? जिसको कम से कम 65% आर इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स. सेम वे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी अगर 65% जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका जो पोर्टफोलियो अगर डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स में है, तो उसको इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोलते हैं. अदर साइड ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है कि डेट म्यूचुअल फंड. डेट हाइब्रिड फंड होंगे जहां पे मिनिमम 35% है, बट 65% से नीचे डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स में है. इनका टैक्सेशन दोनों का अलग होता है. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन केस ऑफ इक्विटी एंड इन केस ऑफ डेट. अगेन डेट म्यूचुअल फंड्स वैसे है जहां पे लेस देन 35% is in domestic equity shares and the rest 65% are in government bonds, corporate papers, वो सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं.
कौन कौन से टाइप्स, अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो अगर आप बहुत सारे आपको जब स्टेटमेंट लेके आपको जब फंड्स के नाम पता पता चलेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टाइप के फंड्स हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन कौन से आते हैं फंड्स आते हैं? लार्ज कैप आता है, मिड कैप आता है, स्मॉल कैप आता है, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी, कॉन्ट्रा, फोकस, वैल्यू फंड्स, डिविडेंड यील्ड फंड्स, सेक्टोरल, थीमेटिक, ईएलएसएस फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। ये सब कैटेगरी, ये जो फंड्स है, टाइप ऑफ फंड्स है, ये सब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। नाउ कमिंग टू हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स व्हिच हैव इक्विटी टैक्सेशन। तो these are balanced advantage fund, multi asset funds. Again, multi asset funds again दो टाइप के हैं, इसमें इक्विटी पोर्शन भी ज्यादा होता है और वहां पे डेट पोर्शन ज्यादा होता है। और दूसरा है हाइब्रिड फंड जहाँ पे डेट इक्विटी का रहता है, बट अगेन दे आर टैक्सेबल एज एन इक्विटी। इक्विटी सेविंग स्कीम्स, इक्विटी सेविंग्स फंड्स एंड आर्बिट्राज फंड्स, these are all categorized as hybrid mutual funds with equity taxation. अदर्स आर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से आते हैं जहाँ पे डेट टैक्सेशन है? जो मल्टी एसेट फंड्स है, बहुत सारे बहुत लिमिटेड कंपनीज के फंड्स है जो ये कैटेगरी में फॉल होते हैं। एंड डेट म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी को छोड़ के बाकी जो टाइप्स के फंड होते हैं, कॉल मनी, लिक्विड, अल्ट्रा, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इनकम फंड्स, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स, डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड्स, ये सब कैटेगरी जो फंड्स है इनका कैटेगराइजेशन डेट म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से होता है। फिर उनका टैक्सेशन और उनका होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि इक्विटी और डेट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी का टैक्सेशन होता है, उनका अगर होल्डिंग 12 महीने से कम है और उसमें कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है। एंड 12 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। ये बहुत लोगों को पता है, बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज रिफ्रेशिंग आपको बताना जरूरी है कि इसका होल्डिंग पीरियड आपको ध्यान रखना है। एंड देन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में जहाँ पे डेट पोर्शन है, एंड देन डेट म्यूचुअल फंड्स, बोथ आर ट्रीटेड एज डेट म्यूचुअल फंड्स। वहाँ पे होल्डिंग लेस देन 36 मंथ्स अगर रहेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, मोर देन 36 मंथ रहेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। नाउ कमिंग टू द टैक्स रेट, कि टैक्सेशन क्या लगेगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे इक्विटी पोर्शन है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में अभी जो चेंजेस हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रहेगा जो लेस देन 36 मंथ रहेगा तो वो स्लैब रेट के हिसाब से होगा। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जहाँ पे 36 मंथ एंड अबव हो चुका है वहां पे 20% होगा विद इंडेक्सेशन। एंड इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स, 1 अप्रैल 23 के बाद अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। जो भी उसमें गेन्स होगा इट इज ऑल टैक्स एट स्लैब रेट। 1 अप्रैल 2023 के बाद, if you have done investments after 1 April 23, then the taxation will be at the slab rates. However, if the investments were done prior to 31st March 23 and the transactions, the redemptions happened in this financial year, then you have to check whether the holding was less than 36 months or more than 36 months. Again, if it is more than 36 months, then you get the benefit of indexation. However, if there is an SIP, अगर there's an investment of a systematic investment plan in debt mutual funds, even if you have done the SIP before 1st of April 23, एग्जाम्पल की 1 अप्रैल 2022 में आपने SIP स्टार्ट किया और उसका SIP चल रहा है एंड अप्रैल के बाद भी उसका SIP हो रहा है, then the investments which fall in this financial year, they will have this treatment as if the investment was made after 1st April 23. So there is no tax slab indexation benefit for those debt investments. Exemption limit for equity mutual funds and the hybrid mutual funds up to 1 lakh per SSC per financial year. So this you can plan if the investments are spread out within the family members, then everybody can take that benefit of 1 lakh per family member. Debt mutual funds में ऐसा कोई exemption available नहीं है. Now that the benefit of indexation has also gone, but there are few mutual funds, have those benefits of indexation, but then उसका holding period भी more than 3 years होना चाहिए. TDS, there's no TDS on the redemption except in case of NRIs. In all the mutual funds जो भी आप रहते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है,
उसमें कैपिटल गेन्स पे देयर इज नो कैपिटल गेन्स अनलेस द यूनिट्स आर रिडीम्ड और स्विच्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एफडी है, एफडी में इवन इफ द इंटरेस्ट आपका एक्रू हुआ है, आपको मिला भी नहीं है, स्टिल ऑन एक्रूवल यू हैव टू पे टैक्सेस। बट इन केस ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, unless until you redeem or you switch, there is no capital gains on it. Same way, आपका annual tax outflow, it is also postponed unless and until you redeem or switch. So if there is a gain in your portfolio, तो तब तक आपको कोई टैक्स नहीं है जब तक आप पैसा निकालते नहीं हो उसमें से। तो ये एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स में या तो शेयर्स में कि आप इवन इफ द पोर्टफोलियो कीप्स ऑन ग्रोइंग, देयर इज नो टैक्सेशन ऑन एक्रूअल बेसिस ऑन द प्रॉफिट्स और नोशनल प्रॉफिट्स इनसे। ये मेजर जो अगर टैक्स हार्वेस्टिंग में इसका बेनिफिट क्या है कि आपका टैक्स बर्डन कम करने का, कि अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप सिर्फ एंड सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में उसको सेटअप कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेटअप कर सकते हो। तो इससे आपका जो प्रॉफिट का पोर्शन है, अगर आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है प्रीवियस ईयर का, उससे आप अगर उसको सेटअप है, अगर प्रीवियस में अगर आपका लॉस है, वो लॉस यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 years, प्रोवाइडेड आपका रिटर्न्स फाइल होना चाहिए वो भी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। इफ यू फाइल रिटर्न्स आफ्टर द ड्यू डेट, then this carry forward benefit is not available. Even if you carry forward, the set of benefit is not available for you. तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ओनली। तो नाउ वी विल कम टू द प्रोसीजर की आपको क्या करना चाहिए कैपिटल अगर आपको देखना है, या तो आपके क्लाइंट्स के लिए आपको देखना है, यू कैन जस्ट एडवाइज योर क्लाइंट्स आल्सो कि आपको अगर टैक्स हार्वेस्टिंग करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर। तो फर्स्ट इज अगर आपके एडवाइजर है या तो कोई अगर आप खुद कर रहे हो तो आप यू कैन आस्क फॉर द स्टेटमेंट्स, कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ब्रोकर और फ्रॉम द एडवाइजर विल गिव यू द रिपोर्ट्स ऑन द स्टेटमेंट्स, एंड वहां पे देन यू कैन कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, पीएमएस का कोई भी कैपिटल एसेट्स का आप स्टेटमेंट मंगा के यू कैन चेक। उसमें से आप बाइफरकेट कर सकते हो रियलाइज्ड कैपिटल गेन्स कितने हैं, अनरियलाइज्ड गेन्स कितने हैं, उसमें से दोनों में से आप बाइफरकेट करके शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है। ये होने के बाद उसमें से आप चेक कीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अगर है तो अप टू 1 लाख देयर इज नो टैक्स। उसके ऊपर अगर जाता है, 1 लाख से ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो देन एक उसके ऊपर आपको टैक्स पेबल आएगा 10% के हिसाब से। बट देन प्लीज चेक द प्रीवियस रिटर्न्स, जहां पे अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो वो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो। वो सेट ऑफ करने के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है, देन आपको वापस चेक करना है कि आपके पास कोई अनरियलाइज्ड कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है क्या। अगर लॉन्ग टर्म अनरियलाइज्ड नोशनल लॉसेस है, उसको आप लॉस बुक करके इमीडिएटली बाय बैक कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में, एंड आप जो अनरियलाइज्ड लॉस है उसको रियलाइज्ड लॉस में कन्वर्ट करके जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में बहुत इजी है, अगर आपको कन्वर्ट करना है अनरियलाइज टू रियलाइज में, आप स्विच अगर सिर्फ स्विच करते हो, अगर आपका ग्रोथ ऑप्शन है उसको आप सिर्फ स्विच कर दो डिविडेंड ऑप्शन में या तो लिक्विड फंड में, एंड देन कम बैक अगेन टू द इक्विटी फंड, एनी ऑप्शन, तो भी दैट इज ट्रीटेड एज एन रिडम्पशन। तो यू कैन आपका पैसा सिस्टम से बाहर नहीं आता है, बट इट इज अगेन विद इन द फंड हाउस ओनली, एंड यू कैन इमीडिएटली डू दैट। ये होने के बाद फिर भी अगर कोई कैपिटल गेन रहता है तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है। ये होने के बाद अगर फिर भी आपके पास कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है प्रीवियस ईयर के करंट ईयर का, वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हो। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रोसीजर। सेम वे फॉर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो, आप आपका स्टेटमेंट मंगा के आप चेक कर सकते हो कि उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितना है, रियलाइज और अनरियलाइज, उसमें से रियलाइज गेन कितना है, वेदर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है क्या, है तो उसको एडजस्ट करो। उसके बाद स्टिल अगर आपके पास कोई है तो चेक करो कि अनरियलाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है क्या करंट ईयर में,
उसको आप रियलाइज लॉसेस में कन्वर्ट करके सेलिंग म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो, तो स्टॉक सेल करके दूसरा कोई भी एसेट सेल करके यू कैन इमीडिएटली बाय बैक एंड वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। वो सेट ऑफ करने के बाद भी अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन बचता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, फिर आपको जो भी 15% जो आपको टैक्स बना है वो आपको भरना पड़ेगा। अगर डेट है तो डेट का तो आपको नॉर्मल इसमें भर सकते हो। नाउ ये कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आप क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करते हो, और जो सीए हैं उनके पास भी अगर कोई आपके क्लाइंट्स हैं, बहुत लोग के पास खुद के पास बहुत सारे शेयर्स होंगे जो डीलिस्ट हो चुके हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको भी आप अगर लॉस बुक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि अगर आप आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है उसके नाम पे ऑफ मार्केट ट्रेडिंग, ये मार्केट क्योंकि सिंस दे आर नॉट लिस्टेड ऑन द मार्केट यू कैन नॉट ट्रेड देयर, बट ऑफ मार्केट इसको आप आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पे कोई नोशनल छोटे अमाउंट पे आप उसको लॉस बुक करके आप इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि बहुत लोग के पास शेयर्स पड़े, बहुत सारे, मेरे पास भी बहुत सारे लिस्ट आते हैं शेयर्स के which are have no value, means they are not listed anywhere, not traded also. So we recommend them कि आप आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पे आप उनको सेल कर दो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करके, फिर लॉस जो बुक होता है उसको आप कोई गेन्स है तो गेन्स के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हो। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है 54F, बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, बट देन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई थिंक वी कैन रिकमेंड दिस और वी कैन गाइड देम। बट बहुत बार क्या होता है कि इट इज जस्ट खाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं और ये गेन्स हो रहा है, तो ये बेनिफिट आप यूज कर सकते हो। खाली ये बेनिफिट लेने के लिए घर लेना इट इज नॉट एडवाइजेबल। बहुत सारे लोग वो एडवाइस करते हैं कि आप कैपिटल गेन आ गया तो अभी चलो नया प्रॉपर्टी ले लो, आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और आपको टैक्स भी इतना कम लगेगा, बट देन दिट इज नॉट एडवाइजेबल। यस, इफ यू प्लानिंग टू बाय रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी देन यू कैन यूज दिस बेनिफिट कि आपका जो भी कैपिटल गेन्स है तो ये आप to set off those gains you can invest in a residential property, but there are conditions with respect to using this section. The gains should only be long term capital gains, पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स आप यूज कर सकते हो, या तो जितना कैपिटल गेन्स रिक्वायर्ड है उतना आप प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगेन जो क्लॉज है 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये प्रोविजन आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोविजन यूज करने के लिए ये आपको कंडीशन आपको बहुत ध्यान रखनी है। नाउ ये टैक्स हार्वेस्टिंग कभी करना चाहिए, ये जब तक प्रोविजन अवेलेबल है तब तक आप इसको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। अगेन आई सेड कि विद टॉक टू योर क्लाइंट्स इफ दे आर ओके विद दिस टर्निंग इन द सेंस कि टैक्स हार्वेस्टिंग विद दिस दे अंडरस्टैंड द प्रोविजंस क्या होता है, इससे कॉस्ट आपका बढ़ जाता है, वैसे अगर दे आर रेडी देन यू शुड डेफिनेटली एक्सरसाइज दिस प्रोविजन टिल द एवरी फाइनेंशियल ईयर ये प्रोविजन अवेलेबल है। एंड आइडियली कभी करना चाहिए ये, बेसिकली ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि जैन फेब मार्च में आप प्लान करना स्टार्ट करो ताकि आप वो ट्रांजेक्शन आपको उसको इनिशिएट कर सकते हो। प्लानिंग जो भी हो आपका, जिस अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है दैट शुड बी एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, टैक्स इन्वेस्टमेंट करना है, बट टैक्स हार्वेस्टिंग करना है तो आइडियली शुड बी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, ताकि आपको पूरा साल भर में पता चले कि आपका साल भर में कितने गेन्स हुए हैं, क्या लॉसेस है। तो अगर आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना है, ये इनिशिएट करना है, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू कैन प्लान, सफिशिएंट टाइम होता है। इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज इसका है कि टैक्स इट कैन इंटरफियर इन द कंपाउंडिंग बेनिफिट। ये कोई क्योंकि अगर जितना पैसा मार्केट में है, क्योंकि अगर मार्केट से आप पैसा विड्रॉ करते हो और वापस इन्वेस्ट करते हो, उस दिन में जो 2-3 दिन का जो गैप हो सकता है, या तो अगर वापस आ गया और वापस इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो कंपाउंडिंग में ये इफेक्ट पड़ सकता है, तो सबके साथ नहीं करना है। अगेन ज्यादा से ज्यादा आप इसमें टैक्स कितना सेव कर सकते हो, टैक्स हार्वेस्टिंग इज 10,000 विच इज 1 लाख, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स बेनिफिट है उसका 10%, 10,000 तक का आप उसमें टैक्स बचा सकते हो। ये टैक्स हार्वेस्टिंग का ज्यादातर ये इतना ही बेनिफिट अवेलेबल है। बट देन अगर आपके पास बड़ा गेन्स है और बड़ा और लॉसेस है, तो दिस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू सेट ऑफ दोज लॉसेस। तो जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने, छोटा एग्जांपल लिया है कि फर्स्ट टैक्स गेन हार्वेस्टिंग का अगर करते हैं तो सपोज मैंने 1 Feb 23 में इन्वेस्टमेंट किया, 15 March 24 लॉन्ग टर्म 1 साल हो जाता है, तो उसके ऊपर गेन 24,000 है, वो साल में कोई टैक्स नहीं है।
वही मैंने पैसा निकाला, जो मैंने विड्रॉ किया, वही मैं दूसरे दिन इन्वेस्ट कर देता हूँ। वैसे करते करते मैं सपोज सेकेंड ईयर भी वैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख जो एग्जामेशन अवेलेबल है, उसका मैं पूरा बेनिफिट लेता हूँ। तो मेरा कॉस्ट जो नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट है, सेकेंड ईयर का आप देखोगे तो द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम्स 2,24,000। थर्ड ईयर मैं रिडम करता हूँ 2,50,000 पे, तो उसका कैपिटल गेन 26,000 है। जो मैंने रिडीम किया पैसा जो निकाला, वापस थोड़े दिन के बाद, 2 दिन के बाद वापस मैंने इन्वेस्ट किया, तो मेरा कॉस्ट बन गया 2,50,000। तो नेक्स्ट ईयर वापस मैंने रिडीम किया 1 साल के बाद, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसा करते करते फोर्थ ईयर में देखोगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकेम 2,80,000 एंड द रिडम्पशन वैल्यू 3,14,000। तो ओवरऑल देखोगे तो मेरा 30, 24, 26, 50, 80, मोर देन 1 लाख रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। 2 लाख में इन्वेस्टमेंट था। अगर मैं 4 साल के बाद विदाउट कुछ ये टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करता था, जैसे ही मैंने 2 लाख का मैंने 3,14,000 4 साल के बाद बेचा था, तो मेरे को डिफरेंस के ऊपर मेरे को भरना, टैक्स भरने को आता था, विच इज 2,14,000 के ऊपर मेरे को 1 लाख एग्जामेशन मिलता था। 1,14,000 के ऊपर 10% मुझे टैक्स भरना आता था। बट बिकॉज ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग, so in these 4 years there is no tax impact as such. The cost has kept increasing every year. सेकेंड केस हम लेते हैं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कि 1 फरवरी 2000 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, लॉस आया, शॉर्ट टर्म लॉस है 1 साल के अंदर में, जो मेरे को पैसा निकाल लिया मैंने, तो देर वॉज अ शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ 1,76,000 में मैंने रिडीम किया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 24,000। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट से मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी था। ये साल में मेरा 1,20,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो वो सेट ऑफ करने के बाद मेरा जो बचा वो 96,000, वो अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जामेशन मिल गया, तो वो साल में मेरे कोई टैक्स नहीं आया। वही जो पैसा मैंने निकाला था, जो रिडीम किया 1,76,000, मैंने 2 दिन के बाद वापस इन्वेस्टमेंट किया, तो दैट बिकेम माई कॉस्ट। उसको मैंने वापस 1 साल के अंदर मैंने रिडीम किया, तो मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिला। दूसरे को इन्वेस्टमेंट से इन दैट सेकेंड ईयर आई हैड सम कैपिटल लॉसेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस, तो वो मैंने सेट ऑफ किया, एंड दैट शॉर्ट टर्म लॉस गॉट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर। जो मैंने पैसा विड्रॉ किया था, आई इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट देयर, दैट बिकेम माई कॉस्ट। आई अगेन आफ्टर लॉन्ग टर्म मींस 1 साल के बाद आई रिडीम द मनी, तो आई गॉट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म लॉस जो था वो कैरी फॉरवर्ड किया, उसको सेट ऑफ किया, जो डिफरेंस आया अगेन विच इज विद इन द लिमिट ऑफ 1 लाख, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जामेशन मिला, तो अगेन देयर इज नो लॉन्ग टर्म टैक्स आउटफ्लो एज सच। तो ऐसा अगर करते रहेंगे तो इट सेव्स योर टैक्स आउटफ्लो। बट यस, ये प्रोसीजरल बहुत है, मींस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको बेचना है, ये सब करना है। इट कैन बी अ वैल्यू एड, बट देन आई डोंट नो हाउ द क्लाइंट विल पे फॉर दिस एनीथिंग एक्स्ट्रा और नॉट, बट देन अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, अगर आप है, तो डेफिनेटली दिस कैन हेल्प, यू कैन ऐड सम वैल्यू टू देम बाय सेविंग द टैक्स आउटफ्लोस। ये ज्यादातर मिस्टेक्स वाइल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग पे हम लोग अवॉइड करना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट है फैग एंड मिस जैन फेब मार्च में आपको ज्यादातर वो इन्वेस्टमेंट लास्ट मोमेंट पे नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दैट टाइम यू डू नॉट प्लान फॉर इट एंड यू जस्ट इन्वेस्ट जस्ट टू सेव द टैक्सेस। तो ये बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हमको नहीं करना होता, फिर भी वो चीज में हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स, बहुत लोग को पता नहीं होता है कि एटीसी में पीएफ का भी बेनिफिट लेना चाहिए, तो पूरा का पूरा 1.5 लाख का 1.5 लाख पीपीएफ में डाल देते हैं या तो ईएलएसएस में डाल देते हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि ईपीएफ का कंपोनेंट भी लेने के बाद जो बचता है गैप, उसमें आप एटीसी का जितना रिक्वायर्ड है उतना इन्वेस्टमेंट करो। स्कूल फीस का भी पोर्शन लेना चाहिए, बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं, कुछ जब रिटर्न फाइलिंग के लिए आते हैं तभी देखते हैं, तो ऑलरेडी मोर देन रिक्वायर्ड लिमिट से इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। बहुत बार लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते थे, वो चेक लॉक इन पीरियड देखते नहीं है कि, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड रहता है, क्योंकि उनको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज 5 साल के बाद उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट जो इन्वेस्टमेंट किया उसका लॉक इन है 10 साल तक, तो इन्वेस्टमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, दैट इन्वेस्टमेंट विल गेट लॉक्ड। उसका जो क्लाइंट है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। इवन इफ क्लाइंट नहीं, हम खुद का भी अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे, अगर हमको पैसा हमको 4 साल के बाद चाहिए, अगर हम कोई एफडी या तो पीपीएफ में डालेंगे, तो हम उसको 4 साल के बाद पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जो
लॉकिंग पीरियड वो सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, एंड यू कैन रिकमेंड योर क्लाइंट एज वेल कि आप वैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए जब भी आपको पैसे लगने वाले हैं। लॉन्ग टर्म है तो यू डेफिनेटली कैन इन्वेस्ट इन सम लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। डू नॉट बाय इंश्योरेंस और एफडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ टैक्स सेविंग्स। ये बहुत बार हो जाता है कि लास्ट मोमेंट है, क्या करना चाहिए, तो चलो इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस बाय कर लिया। कितना कवर होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ जो टैक्स सेविंग 25,000 का प्रीमियम शॉर्ट पड़ा तो मैंने 25,000 का प्रीमियम का मैंने ले लिया। उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, वेदर इट इज यूजफुल टू मीट योर फाइनेंशियल गोल्स और नॉट, कोई देखते नहीं है। एंड दैट्स द मिस्टेक विच मेनी इंडिविजुअल्स मेनी इन्वेस्टर्स फॉल इनटू दिस ट्रैप। एफडीज, अगेन एफडीज में क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक तो जो इंटरेस्ट है इट इज टैक्सेबल, प्लस द इंटरेस्ट डू नॉट जनरेट रिटर्न्स विच बीट योर इन्फ्लेशन। तो आपके एफडीज में आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। तो यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग, यस, जो पर्सन हु कैन नॉट टेक मच ऑफ रिस्क एंड इज वेरी कंजर्वेटिव, you can recommend them the tax saving FDs, but ideally for young ones and those in the middle ages should avoid investing in FDs for this. अभी for this current year आपका ELSS, अगर आपको ELSS में इन्वेस्टमेंट करना है तो लास्ट डेट 26 मार्च तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी छुट्टी है। आप देखोगे 23, 24, 25 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च बैंक हॉलीडेज है, तो द बैंक ट्रांजेक्शन विल हैपन, बट in case of ELSS, the credit is available when the fund is received by the AMCs, by the mutual fund companies. तो आपको बफर रखना होगा 2-3 दिन का। 26 को लास्ट अगर आप करेंगे तो 27 और 28, मैक्सिमम 28 तक उनको क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर म्यूचुअल फंड को क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आपको वो साल का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यस, इंश्योरेंस में आपको बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज ऑन इन केस ऑफ इंश्योरेंस इट इज द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन आप चेक देते हो उस दिन का क्रेडिट मिलता है, जिस दिन चेक क्लियर होता है उस दिन का क्रेडिट नहीं। तो इंश्योरेंस में पॉसिबल है, क्योंकि सब इंश्योरेंस कंपनीज भी चालू रहेंगे, क्योंकि सैटरडे संडेज आ रहा है तो डेफिनेटली उनका भी टारगेट रहता है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट ऑन द लास्ट मोमेंट्स। तो फॉर देम इंश्योरेंस प्रीमियम 31 मार्च तक चलेगा, बट आइडियली आप अवॉइड करो कि मैक्सिमम अगर 26 तक जो भी इन्वेस्टमेंट कर दो, सो दैट बैंक में प्रोसेसिंग के लिए आपको टाइम मिल जाए एंड पीसफुली आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ। So I will just before ending this, I just want to give thanks to my mentor Vijay Mantri ji, with whose discussion I could plan this session. So that's it from my end, and I hope I did proper justice in the topic, and I hope you could get some value out of this session today. Thank you so much, everyone, for your patient listening. If you have any questions, then maybe you can take up some of them. Yes. If any queries are there are some queries in the chat box. You can stop sharing the screen. It's looking black. Yes. So Anurag ji want to ask a query. Yes, Sipti ji. Yeah. I hope we just completed within time, the best time. Yes, very much, sir, because this is such a session and the topic is so much relevant. We want to give more time to our participant to share their queries, There's one with question, respect to the when to sell clients. the shares this year for taxing, because आपको सेल कभी करना है, अभी मार्केट जब भी ओपन होगा तभी आप कर सकते हो, विद इन दोज डेज। आप 31st 28 तक आप सेल कर सकते हो। द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 28 ऑफ मार्च। अब फिर बाय इमीडिएटली आपको 1 अप्रैल के बाद ही आप बाय कर सकते हो, बट आपको चेक करना है कि आपका स्टेटमेंट लेके आप चेक करो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या है, कितना है। Okay. Anurag ji, Yes. please unmute मेरी आवाज आ yourself. रही है आपको? Yes, you are very much audible. Okay. Kaushik ji, good evening. It is your voice is not audible. Still, Can you be little louder? Okay, now is it audible now? Yes. Okay. Kaushik sir, good evening. Am I audible now? Kaushik ji, I think it's audible to me.
Anurag ji, you can put your question, or Okay. you can put it on the chat box, and you can speak. I'll communicate this to Kaushik ji. Please Okay, continue. I'm writing in the chat box. Yes, Yeah, okay, fine. I can hear this. I think You I can, don't think Anurag ji, you can please speak. Kaushik Sab, am I audible now? Yes, sir. Please. Yes. Okay. My question is that I had invested around 5 lakh rupee in the mutual fund, and the value Okay. right now is 10 lakhs. That means there is a gain of 5 lakh rupee. Okay. Now, what I am planning to do is that since the market is too high, I want to sell those mutual fund, and I want to put that money again back into debt mutual fund, and I want to do systematic transfer into the equity mutual fund again in the same scheme. So will Okay. I be losing the compounding effect? Is my Yes. policy, what I am thinking is right, or Yeah. Yes. For a compounding effect definitely lose out होगा because आपका पैसा उतना देर इक्विटी मार्केट में नहीं है. अगर आप बेच के डेट म्यूचुअल फंड के रूट पे आप जा रहे हो इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, उतना टाइम लगेगा वो चीज को इक्विटी में आने के लिए. Okay, okay, these are with a debt fund, but yes, since अगर आपको you can plan it, you can miss out on some of the days, but then you have to be alert कि कौन से दिन पे आपको market you don't know, you cannot time the market. Okay, so okay, it is always advisable कि if you understand this benefit, then नहीं जरूर नहीं है, but आप देख सकते हो किसमें आपको कितना फंड में प्रॉफिट है. सब में करने की जरूरत नहीं है क्या, सबकी जरूरत है क्या, तो जहाँ पे कम है तो उसको आप बुक कर सकते हो, या तो जिसमें ज्यादा है उसमें आप बुक करके कपल ऑफ देम यू कैन स्विच इट ऑफ. बट देन एसटीपी आप उसको कम पीरियड में कर सकते हो, 12 महीने okay, से ज्यादा 6 महीने में कर सकते हो. पैसा जितना जल्दी इक्विटी में जाएगा उतना ज्यादा आपको फायदा हो सकता okay. I got Okay. your point, sir. Thank you. है. So there was query with respect to the WhatsApp group. So I've shared the GyaanStation WhatsApp community link in the chat box. You can please click on that and join for all the upcoming programs. And sir, we also have more queries. I also request the participant to keep posting the queries because we have kept this half an hour session specially from an expert to resolve your queries so that it can benefit you in next coming 10 days with respect to your tax planning. Windows related to Boost. Kaushik ji, should I read a query for you? Yes. Okay, fine. So there's one query from Dhananjay, whether unlisted share set off is permitted even in offline transfer. There is no security transaction tax paid. No, because अनलिस्टेड शेयर्स का ट्रीटमेंट ट्रीटेड एज ए डेट ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें आपको वो टैक्स बेनिफिट वाला जो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है उसमें. Okay. Next is when to sell share this year for taxing this year. यानी मैंने बोला लास्ट तारीख है 28 मार्च के पहले, अगर 28 28 मार्च के के पहले, तो क्योंकि ओके जो जिस दिन आपका बैंकिंग मार्केट चालू उसी दिन आप बेच सकते हो. तो हाँ, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस भी आपको करना है तो आपको आपको प्लान करना पड़ेगा. बट अगर सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हो तो जो दिन मार्केट चालू है उसी दिन आप शेयर्स बेच सकते हो. तो यू हैव टू प्लान ऑन द वीकडेज ओनली. तो दिस वीकेंड आप बोलोगे तो 23, 24, 25 3 दिन छुट्टी है. 26, 27, 28 ये 3 दिन ही बचे हैं आपको, अगर आपको बेचना है तो ये बाकी करंट एक दो दिन है अभी. आज तो हो गया, कल और परसों 21, 20, 21, 22. Yeah, so we are just left with few more days for that. Yeah. The next query is with respect to some US taxation. Better if you can read it by Gopal Agrawal. The query is in tax harvesting shares purchased before bonus can be sold after issue of bonus shares to book losses. In US, he's talking about in US, it is not allowed if you purchase the same share in 15 days. If you purchase back the shares in. हाँ, बोनस देयर कुड बी अ चैलेंज बिकॉज वहाँ पे वो जो रिकॉर्ड डेट आ जाते हैं तो रिकॉर्ड डेट तक अलाउ नहीं करते हैं. बट आई एम स्टिल नॉट क्लियर ऑन दैट.
इन यूएस डेफिनेटली यस, यूएस पे तो आप होता है ना, एक्रूवल पे भी आपको नोशनल गेन पे भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। बट विद रेस्पेक्ट टू दिस बोनस शेयर्स, लेट मी गेट बैक ऑन दिस। Okay. There is another query from Tejas. I have bought new home and paid the stamp duty. Can I avail deduction for the same? यस, अगर आपके पास कैपिटल गेन है और आपने ये साल में अपने घर रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसको आप उसके 54F में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। Okay. If any other queries are there, or someone want to directly ask with the speaker, any query can raise their hands. Kaushik ji, any tip you want to add from your side for our audience? Any special for the benefit they have joined the session with या us? डेफिनेटली Yeah. वही So, बेनिफिट, वही बोला कि ये सब कुछ जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो लास्ट मोमेंट पे मत रखिए। अप्रैल में आप प्लान कीजिए, ताकि पूरे साल भर आपको टाइम मिले कि आपको आपका फंड एलोकेशन कैसे करना है। और दूसरा जो मेजर मैं बोलता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी गलतियां होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी अपना फैमिली मेंबर आ जाएगा, भाई मेरा टारगेट है, आपको टैक्स इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप गलत पॉलिसी भी या तो गलत इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हो। तो ये सब चीज अवॉइड करने के लिए आप प्लानिंग प्रॉपरली कीजिए। अगर आपको द बेस्ट इन्वेस्टमेंट कुड बी बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, कुड बी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिफरेंट पीपल। ईएलएसएस जो बोला, अदर लीस्ट लॉक इन, जैसे आप 3 साल के बाद पैसा कभी भी निकाल सकते हो, वहां पे ग्रोथ का ऑप्शन, पैसा बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगेन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, क्या जरूरत है, दिस यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन प्लान। बट वन थिंग, ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलता हूँ उनके प्लानिंग के लिए। तो मैंने देखा है कि वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी गुड एट प्लानिंग द टैक्सेस एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, बट एक जो चीज जो हम लोग में बहुत कमी है विद रेस्पेक्ट टू पर्सनल फाइनेंस, जो हम खुद का प्लानिंग रह जाता है। तो जैसे एक औरत रहती है ना, औरत घर के फैमिली मेंबर्स का सबका ध्यान रखती है, खुद का ध्यान सबसे लास्ट में रखती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी ऐसे हाल है कि हम लोग क्लाइंट्स के बारे में बहुत सोचते हैं, क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में, टैक्स प्लान के बारे में बहुत सोचते हैं, बट खुद का जब भी पर्सनल फाइनेंस आता है, हम लोग उस चीज में पीछे रह जाते हैं। और हमारा खुद का भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, हमारा खुद का, बहुत लोगों का मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपरली गोल बेस्ड नहीं। तो दिस वन suggestion to all of the chartered accountant, please get serious with your money with respect to financial planning. okay. And खुद का एनपीएस अकाउंट डेफिनेटली ओपन कीजिए। इट इज नॉट फॉर टैक्स सेविंग पर्पस, बट डेफिनेटली रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव से एक जरूरी है, बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। जी। Are mutual fund investment equity shares purchase allowed as deductions? Equity mutual funds only if they are ELSS funds, उसमें आपको चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। आप कोई भी शेयर्स ले लो तो उसका बेनिफिट नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, उसमें आपको लिखा रहेगा, अभी नाउ म्यूचुअल फंड्स के नाम्स भी चेंज हो गए फॉर टैक्स सेविंग्स। नाउ हर एक म्यूचुअल फंड आर, जो भी नाम रहेगा, एक्स जो भी कंपनी का नाम रहेगा, ईएलएसएस टैक्स सेवर, ऐसा फंड का नाम रहेगा, उसी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट ऑन एनी अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। Is it beneficial for investing in NPS for getting additional deductions from your total income? Yes. Not for invest. Do not invest just for, again as I said, do not invest for tax saving purposes. Invest आपको लॉन्ग टर्म आपके फाइनेंस, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए एडिशनल बेनिफिट, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओके, नाउ दो आपको बेस्ट पार्ट बताता हूँ, पीपीएफ और एनपीएस में फर्क क्या है। पीपीएफ में मैक्सिमम लिमिट आपको 1.5 लाख ही है। आप जितना भी आप बोलोगे आपको इन्वेस्ट करना, तो आपको आपको 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने को देंगे। एनपीएस में कोई लिमिट नहीं है, आप 5 लाख भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी वो पैसा आपका लेगा, बट आपको टैक्स बेनिफिट सिर्फ 50,000 ही मिलेगा।
but there is no limit on investing in NPS. NPS में अभी दो टाइप के अकाउंट्स है, Tier 1, Tier 2. Tier 1 में जो इन्वेस्टमेंट करो उसी का ही आपको टैक्स बेनिफिट है. Tier 2 में इट इज लाइक अ सेविंग्स अकाउंट, उसमें देयर इज नो टैक्स बेनिफिट, आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो. Tier 1 का पैसा आपका टिल द एज ऑफ 60 लॉक इन रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. Okay. Sir, when can we take deduction of 5 years FD from the starting or after the investment of 5 years? It is in the year that you make the investment. जो साल में आप FD लोगे वो साल में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. All the investments are payment basis. जब जब आप पेमेंट करोगे, जब जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो साल में ही आपको इन्वेस्टमेंट का उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं. If we purchase under construction property in 23, can we claim capital gain under section 54F in the financial 24 with the redemption of? It is again based on the registration. Stamp duty ने it is registration, जिस दिन आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा वो साल में आप वो बेनिफिट आप ले सकते हो. हाँ, बट अगेन ये ऐसा है कि 1 year बिफोर एंड 2 years आफ्टर, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हो अगर ऐसा है तो. Just to confirm that the delisted shares in the family member's name in offline market and loss arising in the same can be set off against regular sale in the market. Yes, वो आप कर सकते हो. आपको बट यू डेफिनेटली प्लीज कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एडवाइजर है, सो प्लीज कंसल्ट बिफोर डूइंग एनी सच थिंग्स. ओके, so these are just our views that we are expressing, but please consult your chartered accountants or tax advisors before getting into such offline transactions. Okay. So there are more queries. I had invested in mutual fund, now I should start withdrawing or whether to invest again here. I am 78. What is the best plan? Wow. So at this 78, still you are invested in mutual funds. That's a great thing, Praveen ji. Again, मैं बोलता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप उसको विड्रॉ कीजिए. आपकी जरूरत है, आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपको विड्रॉ कीजिए. एल्स अगर आपका पैसा कौन से फंड में है वो देखिए. अगर आप रिस्क ले सकते हैं, वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हैं, तो आप उसमें रहिए. और एल्स एट योर एज डेफिनेटली वी वुड नॉट रिक्वेस्ट टू कीप एवरीथिंग इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. उसको आप 50% डेट, 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप रख सकते हैं. बट प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर, बिकॉज आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. दैट इज व्हिच आई वुड रिक्वेस्ट, बिकॉज एट योर एज आपको अभी आपका इनकम, आपको मंथली रिक्वायरमेंट क्या है, इफ दैट इज मेट, then still you can keep be invested in the mutual funds. Praveen ji, yeah, please. Whether this is what is other remedies to invest, because monthly requirement is very small one. Only 2 persons are there. We are 2 only. Then what is the best alternative to invest? Sir, Okay, thank you. Mutual funds are very good alternative, but then we would request कि आप पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में मत रखिए. आप आपके एडवाइजर से मिलके आप प्लान कीजिए कि आप उसमें से विड्रॉल भी कितना कर सकते हैं और बाकी आपका पैसा भी सेफ है, तो वो हिसाब से आप प्लान कीजिए. और मे बी ऑफ सेशन के बाद also we can discuss if you can share, Deepti, you can share my number or I'll share my Yeah, contact details. sure. Okay. Praveen can ji, discuss. please connect me. I'll share my share you the details of Kaushik ji. Can I withdraw from NPS? Yes, but not up till 60. You cannot withdraw any funds from NPS. हाँ, अगर आपको विड्रॉ करना है तो अगेन इट्स अ प्रोसीजर, और आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा. ओनली 25% आपको अलाउ करेंगे विड्रॉ करने के लिए, वो भी 4 साल 5 साल के बाद. Only in case of emergency only there are specified conditions where you can withdraw from the NPS, not just for आपको कुछ जरूरत है आपने पैसे निकाल लिया. Okay. Any other queries? We still have 5 to 10 minutes more to go. So Kaushik ji is available with us. Meanwhile, Ketan Jain from CA Ketan Jain from Pune, he is the crypto educator, cryptocurrency expert. He joined us. Welcome you, Ketan ji. Thank you. To Welcome, sir. GyaanStation. Welcome, Ketan ji.
I appreciate actually, Dipti. And after a long time, actually, I came to a session. So it was good, Yes. fantastic to hear that. Yeah. So Uh, anything you would like to add, or any query or any inputs you want to, any tool or instrument you want to share with our participants? No, it was first of all, so definitely Kaushik has given a very excellent session on the tax planning and everything. And it was really fantastic to have some information. Even I get some new information on that actually on taxation. Yes, I will just add up. Actually, there are now few new avenues are coming up in the investments. I just want to know because at present even I'm exploring out actually like in crypto taxation is also there where 30% taxation is charged by the government directly if you are investing into crypto. But if you see, I just want to your input on that. Actually, there are ETF which has been launched in US for ETF BTC. Bitcoin ETFs are already launched on 11th January. So if anybody route through ETF when through your domestic broker, and if you are investing into US ETF, so where India we can do investment, how much amount? Second thing, what will be the taxation for that? Any idea? Because for my perception, it is 10 or 20% like short term and long term. We will be falling in that category if you are routing through US ETF. To my knowledge, I still have to confirm, but जो मुझे लग रहा है आप यूएस में करते हो सर, it is in India it is treated as unlisted shares because they are not listed in India. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि they will be treated as unlisted and the taxation would be like a debt mutual funds as a debt जो investment होता है उसके हिसाब से taxation होगा. Okay. Still I'll get back to you on this, but मुझे इतना पता है और कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो एलआरएस के रूट से अवेलेबल है उतना तो उसमें कर ही सकते हैं. और जैसे और एक Yeah. जन किसी मैसेज डाले कि आपको फेमा के रेगुलेशन आपको बहुत ध्यान हाँ. रखना है उस चीज में. Yes, yes. As per rule, I think $25,000 or something are allowed in a year's time, actually, as per within the framework or anything. But still, I will also 2,50,000. check it out. हाँ. 2,50,000 2,50,000. rupees. No, USD. USD. Residence Indian हाँ. can invest up to 2,50,000, right? हाँ, एलआरएस के रूट पे ये अवेलेबल है. Within the framework. फेमा, yes. वो आपको वो सब पहले ध्यान रखना है. Then you can take it. So, okay, sure. Thanks for that, actually. And I'll just also input it, or actually, I had one session probably today. It was got cancelled with the Coinex also. This is related to the specific part on catering to the taxation rule for crypto on all these scenarios. And we are presuming that after the post budget, if we have something new rule comes up in July, when the full budget will be launched, then we can expect something more to come up actually once the regulatory framework also comes up on that. But yeah, as of now, yes, definitely in taxation, I have a lot of confusions still there in the cryptos. Yes, sure. Yes. So Thank you. there's one more query from if I invested in units of, I think if I keep invested in the units of mutual fund who invest in shares of US stock market, are they considered equity mutual fund? Again, to both of you, first Yeah. to, तो yeah. तो आप देखोगे इक्विटी म्यूचुअल फंड का क्राइटेरिया है कि 65% एंड मोर शुड बी इन डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स. एंड अगर आप डायरेक्टली यूएस इक्विटी में कर रहे हो, if it is more than 65% of the total portfolio is again in US equity, then it is not a equity mutual fund. It will be treated as a debt mutual fund. तो आप जहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स, तो क्या होता है बहुत सारा फंड ऑफ फंड्स भी ये फंड पैसा लेते हैं अपने फंड में और वो फिर यूएस के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फंड ऑफ फंड्स वो होते हैं. तो दोज आर ट्रीटेड एज अ डेट म्यूचुअल फंड्स. तो आपको ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक शेयर्स में जा रहा है. अगर मोर देन 65 है तो इट इज एन इक्विटी म्यूचुअल फंड. भले उसमें 5-10% डायरेक्ट स्टॉक्स में यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज एन इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर टैक्सेशन पर्पस. Okay. Your take on this, Ketan sir, and some advice you want to do for the same query?
Well, no, I don't have anything much on that actually, but yes, definitely, if you can go ahead with as per, and we need to look into the FEMA regulations, same rules also for that. But brokers, Indian broking firms who have offices abroad globally, you can route definitely the funds through them actually. So the same taxation rules applies on that. Same we can do it for unlisted shares also. If you are going for unlisted shares in India as well as in abroad, can we do that? Yes, For sir. unlisted companies. इंडिया में अनलिस्टेड कंपनीज का ट्रीटमेंट लाइक अ डेट म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, तो क्योंकि उसमें एसटीटी भी लगता नहीं है. Okay. So no taxation on no transactions, STC and all that, right? It will be treated as a simple अनलिस्टेड पे debt mutual fund. एसटीटी, हाँ अनलिस्टेड पे एसटीटी है तो, बट उसको फिर डेट टैक्सेशन के हिसाब से, तो अभी जैसे डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन है, there is no short term or long term, everything is taxable at the slab rates Okay. current year. Okay. Thanks. Great. Thanks. Thank you. Thank you, Kaushik ji. And we are done with all the queries. And thank you for wonderful deliberation and solving. Actually, it's more on query-based and interactive session we have targeted so that maximum queries of all our participants get answered. And it was really an overwhelming response. And thank you, Ram Mohan Bhave sir, for joining us today and gracing the event. Ketan ji, thank you for being here. And we had Ashish ji from Income Tax Bar Association, president of the Ahmedabad Association, and all our dear participants. Thank you for today's session, overwhelming response, and definitely we'll keep continuing bringing more innovative, informative sessions for all of you. The same session is also live on YouTube channel. You can find the session on GyaanStation YouTube channel for further reference. And again, on 29th, we are coming up with a very interesting topic, that is recent important tax judgment, income tax judgment by Advocate Balani ji, who is a High Court practitioner and who deals exclusively in tax consultancy. This is also going to be a very informative session for all our participants. So stay tuned with GyaanStation. I have already shared all the links of our Telegram channel, WhatsApp channel, and again, I would like to share so that you can stay connected. And again, once again, everyone is welcome. Any professional who want to share his knowledge and want to be the part of GyaanStation as a speaker, give any session or have some innovative topic, then please connect with me. I'm sharing my number. So you can connect with me so we can plan out some good session or courses with you all. Sure. Thanks. So Thanks, Dipti. thank you all for joining. Thank you, Ketan ji. Thank Thank you, you. Kaushik ji, for Thank you, your Thank you. time and such an informative session. Great to have you Yes. on It's a this pleasure. 19th March, just 10 days before 31st March. And very importantly, you told कि 31 March तक का time नहीं, it's going to end by 28th March itself. And in between, we are going to have 2-3 holidays as well as Saturdays and Sundays. So accordingly, things are going to, we have to manage. So Yes. this is the key takeaway. And here we end our today's session. Stay tuned with GyaanStation. Thank you. Thanks, Dipti. Thanks, Kaushik ji. Very nice. Thank you. Thank you. Thank Welcome. you. Thank you. Bye bye, everyone.